तो लास्ट 30 क्वेश्चंस थे, उसमें कुछ कुछ आंसर की में गलत दिए हुए। सो 27 28 उन लोगों ने गलत दिया है, एंड 35 उन लोगों ने गलत दिया है। 34 का मुझे अभी तक समझा नहीं तूने मतलब क्वेश्चन वो सही से क्यों नहीं लिखा। एनीवे और 43 का उन लोगों ने सही दिया था, दैट इज मेरा गलत हुआ था उस केस में। एंड 46 का भी उन लोगों ने गलत किया है। सो दैट्स राइट। इसके बाद में अपन 55th करेंगे। लेट्स गो। ओके, 55th इज अ कार। जी तो 54th है। ओके, a man of mass m stands at one end of a plank of length L which lies at rest on a frictionless surface. The man walks to the other end of the plank. Acha. If the mass of the plank is m upon 3, then the distance that the man moves relative to the ground is. It's a frictionless surface, huh? Oh, okay, okay. I understand क्या हो रहा है। So जो center of mass है that remains frictionless surface है ना, that's the thing. इस पे external force कोई भी नहीं है, horizontal direction that is. So yeah, that remains constant, right? उसका center of mass remains constant. Okay. तो एक एंड से दूसरे एंड तक गया है क्या? राइट। तो जब इस एंड पर है तो लाइक सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहा होगा? यहाँ पे मास m है। ये जो पूरा है दैट इज ऑफ मास व्हाट? प्लैंक का मास m/3 है। ओके, सो ऑफ कोर्स ये जो सेंटर ऑफ मास रहेगा, सो ये तो m/3 पे रहेगा, राइट? थिंग इज कि इट्स गोना बी लाइक 3:1 रेशियो, मतलब कि ये जो डिस्टेंस रहने वाला है, सो दिस डिस्टेंस, और अपने को क्या चाहिए? डिस्टेंस दैट द मैन मूव्स, राइट? तो अपन ये डिस्टेंस देखेंगे। इनफैक्ट दिस इज द सेंटर ऑफ मास और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? सो या लाइक इट्स गोना बी फर्स्ट ये पास में रहेगा एक्चुअली में इसके, बिकॉज ये वाला बड़ा मास है। सो ऐसा, राइट? ऑफ कोर्स। हाँ, सो ये जो चीज रहेगी, दिस विल बी लाइक 3 टाइम्स ऑफ दिस थिंग, और ये जो पूरी लेंथ है दैट्स L/2। सो दिस इज गोइंग टू बी जस्ट I guess 1/4, and this is like 3/4. So 1/4 of L/2, and this is just 3/4 of L/2. अब क्या होगा कि जब तुम दूसरी कंडीशन देखोगे तब यही सेम चीज रहेगी, बस उसका मिरर इमेज हो गया है, राइट? सो तुम्हारा डिस्टेंस कितना हुआ विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास तो चेंज हुआ नहीं ना, मतलब वो सेम ही पोजीशन पर है। सो 1/4 ऑफ L/4 इज व्हाट मूव्स। सो 55th का आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट 56th। Okay, a man weighing 80 kg standing on center of a flat boat, and he is 20 meters from the shore. Okay, he walks 8 meter on the boat towards the shore and then halts. The boat weighs 200 kg. How far is he from the shore at this instant? Sure. ये एक फ्लैट बोट है, उसके ऊपर मैन है, एंड ही स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द फ्लैट बोट, तो यहाँ पर है, और ये 20 मीटर फ्रॉम द शोर है। ओके, he walks 8 meter on the boat towards the shore, तो फिर ये 8 मीटर चलता है on the boat, right? So relative to boat, I guess it's 8 meters. The boat weighs 200 kg. How far is he from the shore at this instant? Right, of course. So the total, yeah, it's like, okay, that's 8 meters on the thing, right? Because the center of mass would of course be over here. So right, ये जो सेंटर रहेगा इट विल मूव लाइक दिस, और ये जो मैन है इट मूव्स लाइक दैट। मासेस क्या है? बोट का 200 है, एंड इसका क्या है? इसका है 80 kg। सो ये है 80 एंड दिस थिंग इज 400। रेशियो कितना होगा इसका? दिस इज लाइक 5 टाइम्स ऑफ दैट, राइट? तो ये 5 टाइम्स हैवी है, तो जब ये थोड़ा सा दूसरे डिस्टेंस पे आ जाएगा, वी नो दैट दिस इज एक्चुअली गोइंग, दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 5 टाइम्स ऑफ ये चीज, राइट? ऑफ कोर्स। और तुम बोल रहे हो कि 8 meters is this complete distance, right? Because जो center है इस boat का वो shift हुआ है, right? So with respect to center, it should be 8 meters, but that's just equal to 6 times ये distance, right? or you can say like, okay, 6/5 of ये वाला distance. So 6/5 of d is equal to कितना है ये? It's how many meters? 8 meters. Okay, ये उड़ गया, यहाँ पे क्या जाएगा? So ये correct तो है ना? It's like that's 5. It's supposed to be, I guess, yeah. What could go wrong, right? Shit, it weighs 200. मुझे लगा ही था कुछ ना कुछ गलत जाएगा। That's 80. This is 200, of course. So इसको reduce कैसे करेंगे? 40 times 2 and this is 40 times 5. So ये 2:5 रेशियो में, okay. तो ये चीज रहेगी 5 टाइम्स और ये 2 टाइम्स रहेगा कुछ भी, क्या?
ऑफ कोर्स। तो ये पूरा 8 है, जस्ट 5/8 ऑफ sorry 5/7 right, was supposed to be, is it correct or not? 80 and 200 यूज करो, 2 and 5 of course, so 5/7 of 8, ये डिस्टेंस इतना, इतने या इतना इसमें एक्चुअली कवर हुआ होगा, राइट? ऑफ कोर्स ये सब नहीं क्या है, भूल जाओ सर। सो 5/7 of 8 डिस्टेंस कवर हुआ, एंड इट वाज, सो बोट ऑलरेडी 20 मीटर्स। ओ एंड लेंथ क्या है बोट की, कुछ दिया है क्या? अच्छा, ही इज 20 मीटर, तो ये पूरा डिस्टेंस 20 मीटर था, इसका सेंटर। ओके कूल। तो अब ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस ये वाली चीज, सो 5/7 of 8 अप्रोक्सीमेटली 20 माइनस 5 है, एक्सेप्ट उससे थोड़ा सा बड़ा है तो फिर 15 से छोटा होगा, राइट? विच इज सी आई गेस, सो सी शुड वर्क। ओके नेक्स्ट, 57. 57 is from a disk of radius a, an isosceles right angled triangle with the hypotenuse as the diameter of the circle is removed. Disk of radius a, an isosceles right angled triangle with the hypotenuse as the diameter. It's a right angled triangle. Okay. Distance of center of gravity of the remaining portion from the center of the circle is okay. Isosceles right angle. Okay, that's important. Huh? सो अपने को पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास रहने वाला इस ट्रायंगल का, दैट्स गोना बी ओवर हियर, राइट? इसका जो सेंट्रॉइड रहेगा वहां पे, और ये डिस्टेंस कितना है, सो रेडियस a है, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू a3, राइट? तो तुम सोच सकते हो कि तुमने एक नेगेटिव मास इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो ये जो पूरा सर्कल था इसका सेंटर ऑफ मास तो ऑफ कोर्स यही था, तो तुमने कितना मास ऐड किया अपने को वो देखना है, राइट? सो लेट जस्ट से जो सर्कल है उसकी डेंसिटी रो थी, ओके डेंसिटी रो है, टोटल मास कितना हो जाएगा, तुमने रो टाइम्स पाई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर किया है इसका मास, एंड देन माइनस के ऊपर नेगेटिव मास ऐड कर दिया, और इसका मास, सो ये ए है और ये 2a है, सो ए स्क्वायर इज द एरिया ऑफ कोर्स, सो सिग्मा ए स्क्वायर दैट्स इक्वल मास, और ये तो ऑलरेडी जीरो पे था, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी जीरो पे था, तुमने नेगेटिव मास ऐड किया, तुमने a/3 पे ऐड किया, राइट? सो a/3 टाइम्स नेगेटिव रो ए स्क्वायर, दैट्स गोना डू द थिंग। कूल। तो रो इसका हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, इट्स गोना बी नेगेटिव a/3 अपॉन पाई माइनस रो, राइट? और रो तो नहीं, पाई माइनस 1, दैट्स राइट। इट्स गोना बी जस्ट a/3 टाइम्स ऑफ, दैट्स नॉट राइट, माइनस पाई। अच्छा ठीक है, इसका मतलब है कि ये यहाँ पर है बेसिकली, या सो yeah, okay, so the center of gravity from the center of circle, that's going to be this thing, like a/3 times of 1 minus pi, right? So basically like a/3 times of pi minus 1, utna dur hai ye, right? So 57th ka answer C. Next question, 58. Is a bob is hanging over a pulley inside a car through a string. What? अच्छा ये bob है, it's hanging over a pulley inside a car. Second end of the string is in hand of person standing in the car. The car is moving with constant acceleration a, directed horizontally as shown. The other end of this string is pulled with constant acceleration a vertically. इसको तुम vertically खींच रहे हो. Okay. The tension in the string is equal to, अच्छा, सो विद रिस्पेक्ट टू कार्ड जो है तुम इसको ए से खींच रहे हो, राइट? विद रिस्पेक्ट टू ऑफ कोर्स हमारे हिसाब से, लाइक राउंड फ्रेम के हिसाब से ये वर्टिकली खींच रहे कि नहीं, वी डोंट नो, राइट? या आई गेस सो, इट्स जस्ट या वर्टिकली, मतलब विद रिस्पेक्ट टू कार ऑफ कोर्स। ठीक है, तो फिर ए एक्सेलरेशन दैट्स इन दिस डायरेक्शन, और ये ए ऐसा है, मतलब कि इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन ए ऐसा होना चाहिए, या सो सूडो फोर्स इस पे लग रहा है, इस पे ग्रेविटी लग रही है, राइट? तो इस पे क्या क्या हो रहा है, इस पे एम ए इन दिस डायरेक्शन, इस पे एम ए इन दिस डायरेक्शन, एंड एम जी इन दैट डायरेक्शन, एंड इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन इज ए इन दिस डायरेक्शन, राइट? या wait, nahin, that's not that. The thing is like r double dot, right, that's equal to a for this guy. I should say negative है, whatever. इसकी velocity क्या है with respect to car of course. Okay.
ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये, वेट, ये तो अजीब हो गया। अपने को कैसे पता है कि ये जो चीज है एक्चुअल में ये मूव नहीं कर रही, इसका थीटा चेंज नहीं हो रहा है, राइट? वेरी वियर्ड। क्यों नहीं, ये थीटा क्यों ना चेंज हो? अगर थीटा चेंज होने लग गया तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी और फिर ये इक्वेशन, या राइट, द थिंग इज कि फोर्स बैलेंस अलग हो जाएगा इसका, या ओके वॉट एवर, जस्ट गो विद द assumption कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, राइट? देन व्हाट यू कैन डू इज ऑफ कोर्स जस्ट से कि एक्सेलरेशन इसका ऐसा होना चाहिए, राइट? ओके कूल, एंड दिस एंगल इज थीटा एंड वॉट एवर। अपने को निकालना क्या वैसे, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू, ओके कूल, सो ये कंप्लीटली ऐसा है, राइट? या दैट्स व्हाट द टेंशन इज लाइक, और ये एक्सेलरेट कर रहा है इसके अलोंग ही इनफैक्ट, ऑफ कोर्स। सो वी नो कि ये जो, राइट, लाइक ओके, टी इज इक्वल टू एम ए प्लस रिटार्डिंग फोर्स लाइक प्लस एम स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये अपने आप बैलेंस हो जाएगा, वो अपन देख लेंगे, फर्क नहीं पड़ रहा। या दैट्स हाउ इट शुड बी, मेक सेंस, कूल। व्हाट इफ ये एक्सेलरेशन अलग है यार, ये थोड़ा अजीब ही हो रहा है, राइट? व्हाट इफ यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, देन दैट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, राइट? या मतलब तुम्हें कैसे पता कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो है कि क्या है, कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली? अगर इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहा तो क्या करेगा अपन? आई मीन, या दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट? तो ये थीटा के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, बट इसमें कहीं दिखा नहीं है कुछ भी। सो ठीक है, जैसे लाइक नॉर्मल लोग आंसर करते हैं, मैं वैसे आंसर कर डालेंगे। या देन टेंशन इज लाइक दिस थिंग, ओके, और इट शुड बी एम ए प्लस इसका माइनस एम ए क्यू, इसको एम ए प्रोवाइड करना है प्लस इसको ये सारे फोर्सेस को हटाना है, या not plus m of course, so C is the answer I guess. Next question, but I know बहुत satisfactory तो नहीं है because इससे अच्छे आंसर थे हमारे पास में using theta whatever. 59, system is shown in the figure, a man standing on the block is pulling the rope, okay, velocity of the point of string in contact with the hand of man is 2 meter per second downward with respect to what यार, मुझे बताओ तो एटलीस्ट। ओके, और ये जो चीज है ये पूरा जो है सिस्टम, लाइक क्या ये फ्रिक्शनलेस फ्लोर पर है कि क्या हो क्या रहा है? प्लस ब्लॉक, ऑफ कोर्स ये पूरा ब्लॉक ना, या एज एक्सपेक्टेड। और ये चीज क्या, आई थिंक ये हाँ, ओ इट्स जस्ट गोइंग अपवर्ड्स, राइट? हॉरिजॉन्टली पता नहीं क्या हो रहा है इस पे, बट ये अपवर्ड्स जा रहा है, दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी, ओके अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, राइट? वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज, ठीक है ना, कर सकते हैं। और ये कितने से नीचे जा रहा है, सो velocity of the point of string in contact with the hand of man is 2 meter per second downward, right? Okay, so क्योंकि 2 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड, okay, ये तो ऊपर जाने वाला है, राइट, इस टाइप से। तो वो जो टिप है वो 2 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड जा रही है, स्ट्रिंग कांस्टेंट लगा दे थोड़ा सा इस पे, लेट्स जस्ट से कि जो पूरा का पूरा ब्लॉक है दैट्स मूविंग अप बाय यू नो, तो क्योंकि ये जो टिप है इज गोइंग डाउन बाय 2 मीटर पर सेकंड, उसको v बोल दो पहले। तो इसमें नई स्ट्रिंग कितनी क्रिएट हो गई, v प्लस यू। इसमें नई स्ट्रिंग, और इसमें कुछ चेंज हुआ ही नहीं, इसमें क्या हो गया, इसमें स्ट्रिंग डिक्रीज हो गई कितनी से, ये u से ऊपर जा रहा है और ये स्टेशनरी इज लाइक u, और ये भी फिर u से डिक्रीज हो गया होगा, विच मीन्स माइनस टू यू एंड दैट्स इक्वल टू जीरो, सो v इज इक्वल टू u बेसिकली। तो इसकी वेलोसिटी भी सेम है इनफैक्ट, मेक सेंस, या और ये v से ऊपर जा रहा है, राइट? ये लेंथ इनफैक्ट चेंज हो रही होगी 2u से, बट एक्चुअल में जो टिप है वो नीचे जा रही है u से, आई गेस दैट मेक सेंस, श्योर। ओके, तो अब लोग करना क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज जस्ट इक्वल टू v, इट्स 2 मीटर पर सेकंड, सो 59 का b कर डालो, राइट? 60, वेट, आई थिंक मैंने कुछ गलत कर दिया, समझ सकता है। आर बी श्योर कि v है ये, ओके नो, ये u से ऊपर जा रहा है एंड देन इट शुड बी v प्लस, ओह गॉड, नहीं सही है, नहीं सही है इनफैक्ट, या इट्स राइट, जो इस सेगमेंट में नई लेंथ क्रिएट हुई उसकी बात कर रहा था ना, ओके इट्स करेक्ट, 60 करते हैं,
A block of mass 2 kg is given a push horizontally and then the block starts sliding over a horizontal plane. कहाँ पर है अपना ब्लॉक? दिख तो नहीं रहा है मुझे. आई थिंक ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है भी नहीं. ठीक है. So block of mass 2 kg is given a push horizontally and then the block starts sliding over a horizontal plane. Sliding, okay. Friction है कि नहीं है? The figure shows the velocity time graph of the motion. अच्छा. The equation of sliding friction between the plane and the block is right. So initially वो रेस्ट पर ही क्या है? अच्छा पहले इसको पुश दी गया मतलब मोमेंटम उस पर इम्पार्ट कर दिया एंड देन इट स्टार्ट स्लाइडिंग. सो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ऑफ कोर्स. इसमें कितना एक्सेलरेशन है? सो इसमें इसका डिफरेंस कितना हो गया? इन 4 सेकंड्स पूरा जीरो हो गया. सो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? सो दैट्स इक्वल टू म्यू टाइम्स जी. सो म्यू इज इक्वल टू 2 अपॉन 10. इट्स गोना बी 0.5 0.2, राइट? सो 0.2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. 60 का आंसर भी हो जाएगा. नेक्स्ट 61. A small coin of mass 40 क्या होगी 40 grams is placed on the horizontal surface of a rotating disc. ये डिस्क है, स्मॉल कॉइन इसके ऊपर रखा है. The disc starts from rest and is given a constant angular acceleration. Okay, the coefficient of static friction between the coin and the disc is given. अच्छा, right. And the question of kinetic friction is also given. The coin is placed at a distance r equal to 1 meter from the center of the disc. अच्छा, r equal to 1 meter, huh? Fine. Magnitude of the resultant force on the disc exerted by the disc just before it starts spinning on the disc. What? Sorry. Magnitude of the force on the coin. Okay, exerted by the disc. Fine. Just before it starts spinning on the disc. थोड़ा अजीब नहीं है? Okay. तो ये कॉइन है. तुम स्पिनिंग बोल रहे हो, आई थिंक तुम रिवॉल्विंग हो गए, व्हाटएवर दैट थिंग, राइट? ओके. सो राइट, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना रहेगा? ओमेगा पर. या इसका आर तो चेंज हो नहीं रहा है, तो बाकी सारे जो टर्म्स रहेगा एक्सेलरेशन टू कांस्टेंट, हाँ वो सारे मर जाएंगे. नहीं फर्क नहीं पड़ रहा. सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ अल्फा एंड ओमेगा स्क्वायर आर, दैट विल ओनली दैट विल बी द ओनली सर्वाइविंग टर्म्स. सो ओमेगा स्क्वायर आर इस डायरेक्शन में है एंड देन टेंजेंशियल फोर्स है आर अल्फा, राइट? सो ये नेसेसरी फोर्सेस है, ऐसे होने चाहिए. अब एक्चुअल फोर्सेस है क्या? एक्चुअल फोर्सेस मेरे पास सिर्फ फ्रिक्शन है. सो ये जो दो फोर्सेस का सम रहने वाला है should be m times of all of that. That is what the friction actually is, right? Yeah. So friction is just equal to, you know, in the square root of the. Cool. Okay. Just before it starts spinning on a disk, right? Yeah. The square root, I think m common lo. M square root of, or in fact, or r भी common ले लो, right? R square root of omega power 4 plus alpha squared. और ये friction is just less than or equal to mu times mg. There we go. So, right, alpha square. Yeah, that makes sense. Alpha तो constant है ना, so like omega power 4 is less than or equal to mu square minus alpha square, I guess. Yeah, and omega power 4. So alpha क्या है? Alpha is 2, right? It's a constant. It's like alpha t is omega. So you can say alpha power 4 times t power 4 is less than or equal to mu square minus alpha square. So t power 4 is less than or equal to mu square minus alpha square t. Okay, upon alpha power 4, so t is less than or equal to 4th root of what? Mu square minus alpha square, and that thing upon alpha. Very weird. So mu is kind of constant actually. यहाँ पे g मैंने क्यों छोड़ दिया? यहाँ पे g स्क्वायर भी चाहिए था. म्यू जी का स्क्वायर हर जगह पे. और इनफैक्ट r भी है ना यहाँ पे. should be mu g upon r का स्क्वायर हर जगह पे. So mu g upon r का स्क्वायर प्लस yeah, okay, so t is, yeah, जब वो स्टार्ट होगा that will be the 4th root of mu g upon r का square minus alpha square upon alpha, which is like more or less just, you know, mu g upon r alpha का square minus उसका 4th root. और उसके ठीक बाद में क्या होने वाला है, राइट? उसके ठीक बाद में या ओके, सो काइनेटिक फ्रिक्शन जो छोटा है ना, अभी स्टार्ट कर दिया यानी ये अब मूव होना स्टार्ट हो गया. सो इन एनी सर्कमस्टांस अपन इसको ब्लॉक नहीं कर पाएंगे. So once it starts moving, right,
when will that happen actually? When this is okay, ये critical condition रहेगी उसके थोड़े बाद में. So this is like, okay, that's omega squared. It's increasing at a faster rate because it's alpha t. Oh, and alpha is constant. Okay, it is the only thing that is increasing in fact. So after some point ये इतना सारा हो जाएगा कि ये provide नहीं कर सकता इसको, right? So because of that, it's like it's moving in this direction as seen by the center of the disk, right? Okay, तो फिर friction just ऐसा act करेगा and it will be less than, yeah, okay, वो हो जाएगा अपने आप. That's how it is. ठीक है. So the magnitude of the resultant force, right? It's gonna be this thing. So the fourth root of mu कितना है? Mu is just a 3/4, and then g कितना है? G is 10, assuming upon r alpha. So r is what is r? Oh, ये सब तो actually अपने को टाइम नहीं चाहिए यार, अपने को फोर्स चाहिए. मैं क्या कर रहा हूँ? The force is going to be this thing of course, right? अच्छा अपने को टाइम भी लगने वाला है guess. Mu mg. Okay, static friction. Q मैंने तो सब किया है. It's just going to be mu mg. Easy as that. Right. So mu क्या है? 0.5, 0.5. Yeah, G is just 40 grams, which is like 0.04 kg. That times 0.5, that's 10 like that's 5, like 0.2. There we go. So A is the answer. But ठीक है, अच्छी analysis थी इसकी. Whatever. Next question. 62. Let's do it. The figure shown below, okay, it shows the forces that three charged particles exert on each other. So the four situations shown can be correct. Three charged particles, huh? Okay. ये क्या है? और ये सारे identical ये क्या है? I guess अच्छा identical पता नहीं अपने को कैसे. Fine. Okay. Okay, action reaction pairs make sense. हो सकता है correct. So ये correct हो सकता है. What about this guy? Action reaction pair, cool. Action reaction pair, that's the action reaction pair. So इसमें क्या हो रहा है? Yeah, this cancels, and this also cancels. Cool. Oh wait, अच्छा ऐसा भी था कि attractive and oh yeah, that's the thing of course. तो ये दूसरे को repulsive है, मतलब ये like charged है, and then ये attractive इन दोनों से can happen of course. इसमें क्या हो रहा है? ये दो अट्रैक्टिव है और ये इससे रिपल्सिव. हाँ हो सकता है. वेट व्हाट? पर इनका वेट समथिंग्स नॉट राइट. ये हो सकता है बिकॉज उससे ये रिपल्सिव हो एंड ये अट्रैक्टिव, राइट? सारे रिपल्सिव हो सकते हैं, दैट्स आल्सो करेक्ट. बट ये चीज, लुक द थिंग इज, ये दोनों का चार्जेस दे मस्ट बी अपोजिट चार्जेस, राइट? और क्योंकि ये इन दोनों से रिपल्सिव है, इसका मतलब है कि इन दोनों के चार्जेस, इसके चार्ज सेम है. इसका मतलब है कि तीनों की तीनों सेम चार्ज के, बट ये फिर ये अट्रैक्टिव हो सकते हैं. वन इज नॉट करेक्ट इन दैट केस. और फोर्थ सारे के सारे अट्रैक्टिव. ओ वन सेकंड, दैट्स नॉट राइट. अगर ये दोनों अट्रैक्टिव, इन दोनों का फिर चार्ज सेम हो गया, राइट? क्योंकि ये इनसे अट्रैक्ट हो रहा है. सो शिट, फोर्थ इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट इज नॉट करेक्ट. अदर देन दैट एवरीथिंग इज करेक्ट. या सो फर्स्ट एंड फोर्थ छोड़ के सब कुछ. नो. Second, third, okay, just second and third, of course. 62 का answer C. Next question, 63. Okay, सुनो ना. A man crosses a river perpendicular to the river flow in t seconds and travels an equal distance downstream in t seconds. The ratio of man's speed in still water to the speed of river water will be. Okay, what's the river perpendicular to the, okay. In t seconds of course, तो वो रिवर से ठीक है and it travels an equal distance downstream in t seconds. So okay, that's what it did, huh? Fine. So equal distance will be 45 degrees में form किया, right? Okay. Let's just say, okay, let's do this thing. तो पहले क्या हो रहा है? पहले इसकी जो रिवर की वेलोसिटी उसको r बोल रहा हूँ, और फिर यहाँ पे r है, राइट? ओके, एक हम इसको u बोलते हैं, व्हाटएवर. दिस इज u, दिस थिंग इज आल्सो u, और ये जो भी है, वी नो व्हाट दिस एक्चुअली इज. इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू जो भी डिस्टेंस लेने वाला है, रिवर का डिस्टेंस, माइनस just d अपॉन t. और उसके बाद में इसने ऐसा ट्रेवल किया, इट्स लाइक
तो टी स्क्वायर रूट 2 अपॉन कैपिटल टी। अब इसमें रिवर की वेलोसिटी ऐसी थी एंड क्योंकि ये 45 डिग्री पे था, या ओके अंडरस्टैंडेबल। सो ये वेलोसिटी ऐसी है इसकी टोटल वेलोसिटी एंड देन प्लस रिवर की वेलोसिटी, दैट्स द थिंग। सो इसके लिए पर्टिकुलरली ऐसा रहने वाला है, राइट, क्योंकि अपोज कर रहा था, देन दिस इज व्हाट हैपेंड। Pause. Wait a second. River velocity वैसी है. Oh, you gotta subtract the thing. So with respect to river, उल्टा होना चाहिए, right? Of course. So अपन ने velocity कैसी देखी? ऐसी, but with respect to river, ये चीज minus ये चीज. That's what it actually is, right? So ये दोनों cases में same होना चाहिए. And this angle is just 45 degrees, of course. Of course. Yeah. Awesome. Let's do this thing. ये एंगल कितना हो जाएगा? 135 डिग्री. सो ये जो पूरी लेंथ रहने वाली है, इट्स लाइक बहुत गंदा हो जाएगा. Isn't that right? This thing is like velocity को अपन ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, d upon t and d upon t. ये दो वेलोसिटी थी और फिर इस केस में ऐसे वेलोसिटी b थी. ओके, तो पहले केस में क्या हो रहा है? इट्स d upon t like this and v like this. और इस केस में क्या हो रहा है? इट्स d upon t like this and v minus dt like sorry, d upon t minus v like this, right? I guess that makes sense. Sure. तो इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. What does that mean? That means कि इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, which means mod v is equal to, या ये चीज. Of course इसका मतलब एक ही हो सकता है, v is equal to d upon t minus v, which means that v is equal to 2d upon t. That's the velocity of the river, of course. Make sense? Right. देखो रिवर की वेलोसिटी मिल गई. ओके, और मुझे चाहिए क्या वैसे? रेशियो ऑफ मैन स्पीड इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ रिवर विल बी. ओके, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर. अपने को मैन की स्पीड भी चाहिए रहेगी. हाँ हाँ हाँ. अच्छा, ये भी काफी अलग हो रहा है, जैसे अपन सोचा था वैसे बिल्कुल भी नहीं है. तो ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग और व्हाट? ओह, ये d अपॉन स्मॉल t है. राइट, इट्स वेरी डिफरेंट एक्चुअली. तो इक्वेशन पूरा अलग ही आ जाएगा अपने पास में. So let's do this thing. It's going to be like u minus t upon t का square plus t upon t का square is equal to, oh god, this is horrible यार. That's equal to ये चीज. t upon small t का square plus u square. So u रिवर की वेलोसिटी by the way, right? और इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? ऐसी. ओके, तो ढूंढना तो पड़ेगा कैसे भी करके. एंड यू वांट सिर्फ रेशियो, नॉट द स्क्वायर, राइट? ओके, दिस इज नॉट गुड. ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा आपको 2d अपॉन t टाइम्स u. दैट्स दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट? यहाँ पे की कैंसिल हो जाएगा, u का t स्क्वायर अपॉन स्मॉल t का स्क्वायर, देन का यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस टी स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी का स्क्वायर, राइट? 2 टाइम्स होता है एक्चुअली. मेक सेंस. सो डी हर जगह से कैंसिल हो सकता है. व्हाट यू विल गेट इज 2u इज इक्वल टू, आई शुड से 2u अपॉन t, दैट्स इक्वल टू d अपॉन स्मॉल t स्क्वायर माइनस में एंड देन प्लस 2d अपॉन कैपिटल t स्क्वायर. ओके, अपने को ये समझ गया. एंड व्हाट अबाउट यू नो ये वाले वेलोसिटी, दैट वुड जस्ट बी इक्वल टू, ये तो पूरा पागलपन है यार. ऐसे बस अपन करते जाएंगे तो हो गया. इक्वल टू लाइक स्क्वायर. हाँ, तो जो अपन ने ये चीज कैलकुलेट की थी, दैट्स व्हाट वी लुक फॉर. अपन को स्क्वायर रेशियो चाहिए पहले तो, राइट? ओके, सो ये चीज इसका स्क्वायर रूट ऑफ कोर्स लाइक यू स्क्वायर, मतलब ये, ओ गॉड, ये पूरा का पूरा पागलपन है यार. एक काम करो अभी के लिए, यू नो व्हाट, टी अपॉन टी को अपन कुछ देर बोल देते हैं, इसको एन बोल देते हैं, राइट? तो यहाँ से आ जाएगा 2u अपॉन डी इज इक्वल टू, और जैसे 2u टाइम्स, सो 2u अपॉन डी अपॉन टी, दैट्स इक्वल टू नेगेटिव n प्लस,
d upon t पर कॉमन निकाला, it should just be 1 upon n, that is right. Okay, और या राइट, ये चीज आएगी ऊपर. ओके, और यहाँ पे ये जो आएगा इसका स्क्वायर रूट लेने वाला है और फिर उसको अपन डिवाइड करेंगे, ऑफ कोर्स उसका 2 करने वाला है, राइट. सो उसका 2 टाइम्स and divide that thing by d upon t as well, right? So what we are saying is like 2 square root of u square plus d upon t ka square and that thing upon d upon t. This will be the, you know, the velocity of the man, which is the river, of course. और फिर अपने को इनका डिवीजन करना पड़ेगा, right? And then you will get a proper ratio, of course. Yeah, that makes sense. And then this whole thing that is equal to this guy, right? Sure. अजीब नहीं है क्या थोड़ा सा, लाइक इट्स स्क्वायर रूट 2 एंड देन यू गॉट स्क्वायर रूट ऑफ, जान दो राइट ऊपर, तो स्क्वायर रूट ऑफ नीचे आ जाएगा, ओके, 2u अपॉन d अपॉन t का स्क्वायर प्लस 4, राइट. दैट्स व्हाट दिस थिंग विल बी. सो दिस इज गोना बी स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर और फिर प्लस 4, दैट्स जस्ट n प्लस 1 अपॉन n का स्क्वायर, राइट. सो n प्लस 1 अपॉन n माइनस n, दैट्स व्हाट वी लुक फॉर. सो इट्स गोना बी जस्ट 1 प्लस n स्क्वायर्ड अपॉन माइनस n स्क्वायर्ड. आपने को क्या चाहिए वैसे, मैन की स्पीड वर्सेस रिवर की स्पीड, व्हिच इज या दिस थिंग. सो ये अपने को मिल गया. एंड देन n इज जस्ट, यू नो, कैपिटल T अपॉन स्मॉल t. सो इसका भी स्मॉल t स्क्वायर प्लस कैपिटल T स्क्वायर अपॉन स्मॉल t स्क्वायर. नहीं, ये हो जाएगा कैपिटल T यहाँ पे. हाँ, ओके, गुड इनफ, दैट शुड डू इट. 63 का आंसर ये होगा. वेट, ये सही नहीं लग रहा है, बिकॉज द थिंग इज कि t must be, you know, smaller than capital T. ये तो फास्टेस्ट, oh नहीं, ऑफ कोर्स फास्टेस्ट नहीं है ना ये, वही तो, ये नहीं है फास्टेस्ट, जस्ट गोइंग डाउन, राइट. दिस इज द करेक्ट थिंग, देयर वी गो. तो ये आंसर कौन सा है? इट्स सी. ओके, बहुत लंबा नहीं था क्या ये? आई गेस हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसी कोई इजी मेथड नहीं क्या करने की? 64th अपन कर सकते हैं यार, अपन, यू नो, लेट्स जस्ट सेट जितने भी अपने नॉन, लाइक लेट्स से जो अपने को इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसी चीजें जो रहेगी उनको कुछ भी बोल दो, उनको 1 बोल देना, ऐसे कर सकते हैं अपन, राइट. तो व्हाटएवर. 64th. If the question of friction between an insect and a spherical bowl of radius r is mu, then the maximum height above center to which the insect can crawl in the bowl is, of course. So maximum height you mean, right? So this is like r, and so initially क्या था? Initially angle 0 था, finally उसके angle theta हो चुका है, we don't know क्या है. We'll try to figure that out. So ये जो है ये tangent, what is this angle going to be? I guess it's also theta because ये 90 plus theta रहेगा. Yeah. Okay. So once again, just mu mg cosine theta, that is the thing. Okay. So mu mg cosine theta, that should be just you know, bigger than or equal to mg sine theta for it to stay on it, right? So what does that mean? Tan theta must be less than or equal to mu. So critical condition के लिए tan theta will be actually equal to mu, right? And what we look for is of course this height, which is r times of 1 minus cosine theta. So r times of 1 minus cosine theta क्या होता है? Tan theta is what? Mu. What is cosine theta going to be? That's going to be 1 upon square root of 1 plus mu squared, which is answer B. Next question. 65. Okay, a particle is moving in a circle of radius r in such a way that sorry. Ouch. Particle is moving in a circle of radius r in such a way that at any instant total acceleration makes angle 45 degree with the radius vector. Okay, if the initial speed of the particle is, and it's on a circle, seriously. Okay, if the initial speed of the particle is v naught, then the time taken by the particle to complete the first revolution. Wait, but it's on a circle, huh? That's very weird. So r alpha की वैल्यू रहेगी और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर yeah. Wait, we just want the acceleration. It should be like, okay, r alpha in this direction, what omega squared r in this direction, right? And it makes what? 45 degree the radius vector.
Looks not good, you know. Yeah, क्योंकि ये ऐसा जा रहा है. How does that make 45 degree with the radius vector? ये तो ऑब्वियस एंगल क्रिएट करेगा, right? Of course. I guess तुम ये बोल रहे हो, but then why is this 45 degree? It doesn't make any sense. Initial speed of the it's a circle. Oh god. मतलब ये चेंज तो नहीं हो रहा है डिस्टेंस. This is not good. Initial speed is given, then the time taken by the particle to complete the first revolution is. Okay, whatever. Let's do this thing. So this makes what angle 45 degree अपन assume कर रहे हैं. So what we are actually saying is like r alpha should be equal to omega square r. That's all you are saying really. So इसका मतलब हो गया omega square equal to alpha and we want it to complete the first version or initially v naught upon r is omega. जो भी है. Right. This is like okay, so this is d omega upon dt. वहां से क्या हो जाएगा? Omega 1 negative 2 is like negative 1 upon omega is equal to t. Oh god. It's supposed to be t. Yeah, okay, fine. And then plus some kind of constant, of course. Yep. So omega is just like negative 1 upon t plus some kind of constant. Initially क्या है? Initially omega is so at t equal to 0, omega is just v naught upon r, right? So this c must in fact be just negative r upon v naught. Yeah. So really, this is just equal to 1 upon r upon v naught minus t, and this is equal to dt upon dt, right? Initially it has 0 and whatever. So integration करते हैं इसका. Negative natural log of r upon v naught minus t. It goes from 0 to whatever the time required is. That's equal to 2 pi. There we go. So natural log of okay, तो 0 पे ये चीज just r upon v naught हो जाएगी, and then at t is going to be like that. Okay, cool. It should just be like 1 minus capital T upon r upon v naught. It's like okay, यहाँ पे v naught आ जाएगा, यहाँ पे r आ जाएगा, right? नहीं, ये गलत है. यहाँ पे r, यहाँ पे v naught. That's equal to what? 2 pi. So t v naught upon r, that is equal to 1 minus e power 2 pi, right? Oops, negative, यहाँ पे negative है. Negative 2 pi, that should do it. There we go. So t is just r upon v naught times सारी गंदी चीज़. फिर डरा दिया मुझे इसने. R upon v naught and then 1 minus e power r negative 2 pi. Cool, which is a B option. 66th. Yeah, I guess it should work. Okay, next question. 66th is a particle flying horizontally strikes a smooth inclined plane and rebounds vertically if the angle theta equals 60 degrees and the coefficient of association for collision is. Flying horizontally, कौन सा particle? अच्छा ऐसा. Strikes a smooth inclined plane and rebounds vertically. Okay. If the angle अच्छा ऐसा. Wait, is it elastic? I guess it is because friction तो है नहीं इसमें. Okay, if the angle is 60 degrees, the coefficient of restitution for the collision is and it rebounds vertically, right? Oh, but friction तो होना नहीं चाहिए. Interesting. Right. जिसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है, राइट? दैट मेक्स सेंस. देखते हैं. सो दिस थिंग इज लाइक या इट्स मेकिंग एंगल व्हाट थीटा व्हिच इज दिस डिग्रीज और फिर ये वर्टिकली रिबाउंड हुआ व्हिच विल ओके नाउ इट विल मेक एंगल 30 डिग्रीज लाइक दैट. सो पहले इसका वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में था या एंड देन ओके इसकी वेलोसिटी स्टिल उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्टिल सेम रहेगा. सो ये जो भी है इसको तुम u बोल दो. दिस इज लाइक u square root 3 एक्चुअली. ये u still वैसा ही है and now this is making 30 degree and whatever, so this should just be u upon square root 3. So u square root 3 velocity of approach थी and u upon square root 3 velocity of separation है. So उसका ratio which is going to be 1 upon 3, right? So इसका आंसर A good है. Yeah, A हो जाएगा. Next question. 67. Okay, कितने इसमें questions? काफी सारे. Right, so it's like 23 questions. Fine, so I guess we should stop for now. See you in the next video.